So I have started a YouTube live also. So I'm posting the link in the chat box. So you can post it into your respective classes का group. अगर किसी को by chance बाद में if meeting gets locked out, मतलब locked in हो जाता है, और किसी को बाद में join in करना है, so that person can join in. Okay. So can we start? Can we start? Okay, good. Let's start then. Who is this 952157? Just put your name so that I can understand who is the person is. First question. Wait, let me share the screen. This is the question. You can take a screenshot of the question. Wait a minute. No. It's a correct question. I am. Question here. Okay. So the question is, Mr. Rahul Deshmukh works with the Central Railway. He gives you following information for the year ended 31st March 2022. Okay, that's fine, Priyanka. So basic salary is given to us, that is 50,000 per month, and we know already क्या हमें क्या चाहिए होता है, हमें income for the year चाहिए होता है. So इसको क्या करना पड़ेगा, into 12 करना पड़ेगा to get the income for the whole year. Then we have dearness allowance. Dearness allowance will be also added, or will be part of your salary, so it will also get added to the income from salary. Then received arrears of salary, तो last year का कभी का या कहीं का भी तो outstanding है, तो उसको इस साल मिला है, and we know when we receive the amount or when we pay the amount, which at that time only we pay the taxes for the assessee, तो वो वाला ये add हो जाएगा. Then we have conveyance allowance received is 25,000 and amount spent is 18,000, and we know that we get deductions or we get the जितना आपने पैसा खर्च किया है उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा, राइट. सो यहाँ पे जो 25,000 है विल बी considered and then minus we will do 18,000, and बाकी का जो भी पैसा बचता है that will be taxable income under salary. Then reimbursement of medical expenses in the government hospital, ये चीज इसका जो गवर्नमेंट का टैक्स पे किया हुआ है that we have to consider. Then we have profession tax deducted from salary 2,500 per annum, which is common for all, which we will be considering for the deduction under section 16 for the income of salary. The information given to us, dividend received from Bank of India. So we know that any income which is received or which is considered or which is gained out which is other than your business or salary or house property or capital gains, that is fixed assets or the long term assets, उसे क्या कहा जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो यहाँ पे आपके पास दो इनकम हेड है, एक तो सैलरी का इनकम हेड है और दूसरा कौन सा है, अदर सोर्सेस का इनकम हेड है. सो इनकम हेड में क्या दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इज 10,000. सो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा. Interest received from government securities is 15,000, so that will be also considered as income from other sources. Royalty received is 60,000. He paid by check mediclaim premium of rupees 18,000 on health of himself, spouse and children. So यहाँ पे तुम लोगों को deductions, right? You have done the deduction chapter. So जो deduction chapter में हमें deductions बताए गए हैं जिसमें mediclaim का deduction आता है, right? Which is 80D, right? So 80D जो mediclaim का deduction है, that we have to use, and we know the deduction is available for 25,000, right? And he has spent only 18,000, तो इसको पूरा का पूरा पैसा deduct करके मिलेगा from his total income. He had taken loan from SBI for higher education of his son who is pursuing MBA with Mumbai University. So वो लोन कितना है, that we have to check, because यहाँ पे interest on higher education loan पूरा का पूरा deductible है, तो उसने जितना भी interest pay करा है पूरा का पूरा उसको क्या मिलेगा, reduction मिलेगा from this total income. Compute his taxable income for the assessment year 2020-23. So what you have to do is just get the screenshot of the question so that we can start with the solution of the question. Okay. Just give me a second. Okay. Let's start.
Let's make the format first. How the format is been? As usual, आपका जो assessee है, ठीक है? That the name you have to write down first. So यहाँ पे I will write down the questions का नाम. एक minute. I think the screen is visible now, right? Yeah, clearly. ऊपर लिखते हैं. So question number. I guess the question number is 5, right? Question number is 5. Those who have books, उनके लिए the question number is 5. Okay. Let's start. What, how we supposed to write down? ऐसे लिखते हैं हम लोग. सबसे पहले क्या आता है? मिस्टर राहुल देशमुख, right? In the middle. Then what we write down? This is computation of total income, right? So यहाँ पे क्या लिखा जाता है सबसे पहले? Assessee is the individual. Is an individual as well as resident and ordinary resident. Okay. उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? Previous year and assessment year. So previous year कौन सा है हमारा? What is the previous year? Previous year कौन सा है? अभी तक रट्टा होना चाहिए था. Assessment year. Assessment year is 2022-23. Okay. Now we'll start with the actual proceedings of the questions. So इसमें क्या आता है? सबसे पहले here we'll be writing down serial number because कौन सा है वो दिखना चाहिए. Then we have particulars. उसके बाद आएगा 3 amount का column. Okay. Am I clear? Am I clear? सबसे पहले suppose they have given you the information of salary. So first we'll calculate income from salary. Okay. Under the head of income from salary, what we have to write down? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? Basic salary, right? So basic salary जो कि दिया है per month. So we have to find it out for per year. Per month कितना दिया है? 50,000. So 50,000 into 12 is how much? कितना आता है 50,000 into 12 months? How much it is 50,000 into 12 months? कितना आएगा? Calculate it quickly. Yes, it is going to be 6 lakhs. Right? एक मिनट मैंने amount column बिल 6 lakhs. Now, basic salary के बाद हमें क्या दिया है? DA दिया, right? That is your dearness allowance. Dearness allowance कितना दिया? It is also given as per month, right? 15,000 into 12. So how much it will be? 1,80,000, correct. Dearness allowance के बाद we have been given the arrears of salary. How much it is arrears of salary कितना दिया है? 40,000. So we'll write down 40,000. Then arrears of salary के बाद हमें दिया है conveyance allowance. लेकिन conveyance allowance का एक रूल है ना, conveyance allowance जितना दिया है उतना का उतना अगर उसने पूरा का पूरा spend कर दिया होता, then he would have got the पूरा का पूरा मतलब डिडक्शन. अभी उसने ऐसा किया नहीं है, उसने सिर्फ थोड़ा ही पैसा उसमें से यूज किया है. सो उसने जितना अमाउंट स्पेंड किया है, he will get deduction for only that much amount, right? So amount spent which is 18,000. So कितना आएगा बैलेंस? टैक्सेबल इनकम में कितना जाएगा? 25,000 minus 18,000 will be how much? Yes, 7,000. So 7,000 will be considered under the head of income from salary. Then उसको क्या मिला है? Reimbursement मिला है. Reimbursement of medical expenses. Right? कितना मिला है वो?
It is given as 48,000. But he being the government employee, right? तो उसको ये पूरा पैसा क्या हो जाएगा? He will be able to ask the deduction for, or you can say the amount पूरा का पूरा उसको minus हो जाएगा from the consideration of total income under the head of salary. Okay, so less reimbursement, yeah, that is we call it as exempt. Okay, less tax free लिखो या फिर exempt as he is a government employee. Okay, so government employee होने के कारण इसको ये पूरा का पूरा पैसा exempt हो गया है. यहाँ पे आएगा नील. So now can you find out how much is the total income? मतलब gross total income. This will be considered as gross total income. कितना आता है gross total income? 6 lakhs plus 1 lakh 80, 7 lakh 80,000. 7 lakh 80 plus 40 plus 7, so that is going to be 8 lakh 27,000. Okay, इसमें से हमें लेस क्या करना होता है? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शंस, राइट? और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. ओके, विच आर दोस डिडक्शंस? सबसे पहले एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अपना. हाउ मच इज द अमाउंट फॉर? Yes, first 50,000, then professional tax. That's correct. Standard deduction is 50,000 and professional tax paid, which is 2,000. 30,000 किसने लिखा? 2,500. खुशी, हाउ 30,000 कौन से जमाने में तू गया? वो 30,000 वाला जमाना. It was in 2000 something. It is not per month, right? It is per year. It is per year. हाँ, it's okay. सबसे गलतियां होती है, मुझसे भी होती है. So total deductions available, or total this thing is available is 52,500, right? Yes. So 52,500 is the total deduction available from the salary. Now we can find out the income from, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, net taxable income from salary. Okay, so 8,27,000 minus 52,500 will be how much? 8,27,000 minus 52,500 will be how much? Yes, 7,74,000. 7,74,500. Correct? So that is what your income from salary is, right? Now we'll move to the next part. Next part is, next कौन सा दिया है हमें? We have been provided with the income from other sources. Okay, so income from other sources के लिए क्या क्या दिया है? सबसे पहले they have given the dividend. जो तीनों के तीनों income दिए हैं, तीनों we are going to consider under the other sources only. So dividend received from, सबसे पहले dividend received from Bank of India. The amount is 10,000. Then dividend received के बाद आता है interest received. So interest received from government securities.
How much is the amount? 15,000. Then उसके बाद कितना है? रॉयल्टी है. So royalty received amount is 60,000. Okay. Now total amount will be written into the outer column as income from other sources. Interest from, no, it is 15,000. Khushi, it is 15,000. Check the question again. If you have taken the screenshot, you can check the question again. So now, what will write down? क्या लिखा जाता है? Net taxable income from other sources. कितना आएगा? 10,000 plus 15,000 plus 60,000. It is going to be 85,000. Right? Means royalty receipt means मैं उसने कभी कहीं कोई बुक वगैरह पब्लिश किया है तो वो बेचा जाता है, तो उसका बेचे जाने के बाद उसको कुछ एक परसेंटेज अमाउंट मिलता है. दैट परसेंटेज अमाउंट इज बीन कॉल्ड एज रॉयल्टी. Okay, so net taxable income from other sources हो गया. And now we can find out the gross total income. Gross total income, इसे हम लोग C बोलेंगे. That is the total of income from salary and income from other sources, right? So 7,74,500 plus 85,000 is how much? 7,74,500. Yes, it is 8,59,500. ये होने के बाद now we will move to the next heading. And well, next heading nahi, we can call it as the next part of the question, that is deductions. So ये जो deduction जो है वो बहुत ज़्यादा important है. Let's deductions under chapter 6A. Okay, so these deductions are very, very, very important. So under that, right now what we are having first deduction as under section 80D, right? 80D दिया है उन्होंने. क्या दिया है 80D के अंदर? He paid mediclaim, right? Mediclaim for self, spouse and children. Okay, 25,000 is the allowed deduction and इसने कितना spend किया है? 18,000 only. So he will get total full जितना उसने spend किया है उतना का उतना, right? The maximum limit is 25,000. Now second deduction यहाँ पे कौन सा दिया है उनको? उसने interest pay किया है on his son's higher education. तो उसका जो interest है that will be पूरा जितना interest होता है उतना का उतना उसको क्या मिलेगा? Yes, it is 80E, right? Under section 80E. So that is interest on higher education loan. I hope you all have that limitations. मतलब से सब जितने अपने सेक्शन से सबके लिमिटेशन सबके पास है, राइट? कितना लिमिट है हर एक सेक्शन का? तो 60,000 total available deductions कितना हो जाएगा? 60 plus 18, that is 78,000. So minus 78,000. And now you will get net taxable income. Okay, this net taxable income.
एंड दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। तुम लोग अभी जब भी तुम लोग कमाने लगोगे तुम लोगों का जो इनकम कैलकुलेट है वो भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ओके, सो 8,59,500 minus 78,000 will be how much? Yes, it is 7,81,500. Okay, am I clear to everyone? Am I clear to everyone? किसी को डाउट है इसमें? Just take. Great. Okay, we can take a screenshot of the things so that we can move ahead. Right? Take a screenshot of the question का solution, then we can move ahead. Who is this now? Don't even कुछ भी मत करना मेरे स्क्रीन पे ऊपर, ठीक है? हाँ वही सिखा रही हूँ, हाउस प्रॉपर्टी के वाला ही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये हो गया, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Source salary and house other sources. There will be one more question for this, and then we will move to the अदर सोर्सेस का एक और क्वेश्चन करते हैं, सैलरी प्लस अदर सोर्सेस का, जिसमें अलग डिडक्शंस है। सो विल डू दैट एंड देन विल मूव टू द हाउस प्रॉपर्टी। ओके, so what is being given to us? Mr. Bipin Rawat, aged 62 years, gives you the following information for the year ended on 31st March 2022. Basic salary is given basic salary is given to the net salary is given to you, that is 60,000 per month. Then we have been provided with the dearness allowance, that is 30% of the basic salary. So we have to calculate basic salary kitna diya hai hame. How much is the basic salary given to you in the question? कितना दिया है? They have given you the net salary, मतलब जो हम लोग जो actual exam मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, तुम लोग जो निकालते हो ना इनकम टैक्स, नेट टैक्सेबल इनकम, वो उन्होंने तुमको दिया है। मतलब इस बार जो हम लोग क्या करते हैं जनरली, 60,000 into 12 is 72. Yes, correct. 7,20,000 will be your net taxable income for this salary thing, right? Then we have to move ahead. Then dearness allowance है, dearness allowance कितना आएगा उसका 30%, right? So 30% you have to calculate. उसके बाद बोनस दिया हुआ है declared, बोनस क्या हो जाएगा? बोनस क्या हो जाएगा? Is bonus is taxable? Is bonus taxable? I'm asking you something. Yes. No. Okay. So ये यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? Will we consider that? No. Correct. Then we have ex gratia received. So ex gratia received will be considered in the taxable income because उसको वो taxable है. उसके बाद है entertainment allowance. ये government employee है नहीं, तो government employee होता तो what we have done, अगर हमारे पास वो 3 conditions है, right? So we would have used those 3 conditions and we would have given the deductions under the section जो हमारा 10 है उसके अंदर उसको डिडक्शन मिलता, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा, जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एडवांस अगेंस्ट सैलरी, अगेन इसके साथ क्या करोगे? व्हाट विल डू विद द एडवांस अगेंस्ट सैलरी? इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन, राइट? एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ काइंड ऑफ अ लोन। डू वी कंसीडर इट अंडर सैलरी? हम उसको सैलरी के अंडर कंसीडर करते हैं? We don't consider it under the, yes, we don't consider it under the head of salary. Next, recognized provident fund deducted from basic salary for the year. तो ये क्या हो जाएगा? You have to add back this into the your basic salary to get the actual amount of salary. ठीक है, ग्रॉस सैलरी का जो अमाउंट है आपका वो मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to add back this PF amount to the
net salary, then you will get the actual amount paid for the salary or paid or received in the salary. Other information given to you is winnings from lottery, then expenses on the purchases of lottery tickets. तो यहाँ पे हमें पता है what we do is ये जो लॉटरी का टिकट है दिए जाएगा अदर सोर्सेस में, एक्सपेंसेस ऑन द परचेसेस जो भी है तो अलाउड नहीं है, ऐसे लॉटरी टिकट्स के ऊपर अलाउड है नहीं, एक लॉटरी टिकट्स के ऊपर कोई भी तरीके का एक्सपेंस है, बाकी की जगह पे भी जनरली गिव द एक्सपेंसेस और वो नहीं होता, राइट, वी माइनस इट, पर यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट सरस्वती बैंक वो 12,000 का है तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। ही डिपॉजिटेड 50,000 इन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑन 11/2022, तो ये इसको डिडक्शन मिलेगा अंडर द सेक्शन ऑफ this thing 80C. Then we have computed taxable income for the assessment year 2022-23 and जो interest उसको मिला है ना, interest on saving bank account with South Bank, वो उसको क्या मिलेगा, that is also a deductions available for him under the section 80 TTA which is having the saving bank interest, ठीक है, जिसका मैक्सिमम लिमिट कितना है अलाउड किया हुआ या आपको नॉन टैक्सेबल इज 10,000, सो एनीथिंग बियॉन्ड 10,000 इज टैक्सेबल, ठीक है, सो वो आपको डिडक्शंस में लिखना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट राइट नाउ विद दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। This is question number 8. So I'll just write down here question number 8. Okay, let's start. What is the assessee's name? क्या दिया है, बिपिन रावत, right? So बिपिन रावत, Mr. बिपिन रावत. Let's start with the solution. First, we have income from other sources. Sorry, income from salary. Income from salary कितना है? Basic salary से we start, right? So basic salary. Basic salary is given as 60,000, right? So 60,000. संयोगिता मी सांगते तुला एक्सग्रेशिया म्हणजे काय ते, but just give me some time because first I'll just finish this up and then I will come to your doubts, whatever that doubts we have, okay? Excel sheet नहीं दिख रही है, okay, sorry, I may have forgotten to share it, okay, sorry. Now, are you able to see it? क्या हुआ सौरभ, क्या हुआ, why? The question is why. So it is 7,20,000. Basic salary में we know that the deduction is always there for PF, so वो हमें add back करना पड़ेगा उसमें से, ठीक है, because वो net salary दिया हुआ है, right, उसमें, so PF deducted और PF deducted उन्होंने क्या दिया है, पूरे year का एक साथ दिया है, so that is how we will be writing down here 48,000. So we will get the actual salary that we are going to consider. एक मिनट, so कितना आएगा, 7,20,000 plus 48,000 is how much? 7,20,000 plus 48,000 is how much? This 7,68,000. Correct. Now next we will move to the basic salary के बाद हमें दिया हुआ है dearness allowance, जिसके लिए क्या बोला है, 30% of basic salary. So basic salary कितना है, हम ये हमारा हमने find out किया 7,68,000. Now find out 30% on it. Find out 30% on it. It is coming as 2,30,400. So 2,30,400. Now we'll move to the next one. Next one क्या दिया हुआ है, ex gratia. So ex gratia is taxable. तुम लोगों ने सैलरी के सम्स के उसमें आया होगा ना ex gratia. Ex gratia is given as कितना दिया है क्वेश्चन में, it is
1 lakhs. देन एक्स रेशियो के बाद क्या दिया है, बोनस दिया है जो डिक्लेयर्ड हुआ है बट रिसीव नहीं है. We always remember that unless and until the amount is received by the assessee, you cannot put it under taxable income, right? So ये declared है but yet not received, so they will not consider that particular thing for this assessment year. Next, entertainment allowance दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, तो जो पूरा का पूरा है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा. ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया है, 40,000. एक मिनट, just let me check. No, entertainment allowance is given 36,000. Sorry, 36,000. Next, entertainment allowance होने के बाद हमें क्या दिया है? Then we have, okay, so we have actually used up everything that has been given to us. So we can start with the finding out gross income under the head of salary. कितना आएगा, 7,68,000 plus 2,30,000 plus 1 lakh plus 36 is how much? This will be how much? It is coming as 11 lakhs 34,400. Okay, 34,400. We'll just bold it. Now we know what is the next thing that we're supposed to do. We have to do the deductions, right? So एक तो पता है हमें, अगर इसने प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं किया है तो एक डिडक्शन इसको हमेशा मिलेगा जो सबको मिलता है, that is your standard deductions, right, which is of 50,000 rupees. तो ये इसको मिलेगा, that is 50,000. बिकॉज प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, सो वी विल नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर डिडक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर असेसी. ठीक है, अगर कुछ बोला होता देन वी वुड हैव कंसिडर्ड दैट. ओके, नो डाउट. अगर नहीं बोला है तो नहीं लिखने, कहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी उसके बारे में कुछ भी like you can there is no mention of professional tax only. They haven't even amount का तो छोड़ो, because we know that professional tax is 200 rupees per month and in the month of February you pay 300, so total is 2,500 for any employee, right? Yeah, total income from salary is 10,84,400. Yeah, 84,400. Now let's move to the next income, that is income from other sources. Next, let's start. Income from other sources में क्या है? Winning lottery tickets लिखा है उसने, winning from lotteries, right? Lotteries. Amount is given as 50,000. पर we know that lotteries के ऊपर कोई भी expense होता है तो we don't consider it under the exempt के अंदर, वो नहीं आता. So less expenses allowed nil, right? तो outer column में जो amount जाएगा that is also 50,000. नेक्स्ट हमें दिया है सेविंग बैंक इंटरेस्ट. सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इसके लिए तुम्हें ये भी मिलेगा, डिडक्शन भी मिलेगा अंडर टीटीए. ठीक है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज रिसीव्ड 12,000. नेक्स्ट इट इज we will find out net taxable income from other sources, which will be, कितना आता है ये, 50,000 plus 12,000 is how much? 62,000. Correct? What will be the gross total income? Gross total income कितना आएगा? 10,84,400 प्लस है 46,400. कैसे? कुछ भी
प्लस करना है ना, यस प्लस करना है 50,000 10,84,400 प्लस 62,000 कितना आता है? तुम लोग अगर बुक में देख के आंसर देखोगे तो ये गलत ही आएगा. इट इज कमिंग एज 11 lakhs. हाँ ये देखो मीत, बुक में देख के आंसर देख दिया ना मुझे, गलत है बुक का आंसर. एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द बुक इज नॉट राइट. ओके 11,46,400. आई नो तुम लोगों ने बुक में देख के ही आंसर दिया. 86,000 बुक का ही आंसर है, मेरे को पता है, सुबह मैंने देखा था. Right now I don't have a book, otherwise I would have cross-checked and I would have given you the answer. Anyways, now we'll start with the deductions, right? तो सबसे पहले deduction हमारे पास है for this particular question is under the section 80C. 80C के अंदर कौन से deductions आते हैं? Anybody remember? कौन सा deduction आता है? इसने एक तो वो PPF में contribute किया, right? That is recognized provident fund, right? उसने वो किया है, which is amounting to rupees 48,000. तो उसको उसका डिडक्शन मिलेगा. So let's write down deposited in recognized PF. अमाउंट कितना है उसका? उसने दिया हुआ 48,000. उसके बाद उसने और एक चीज में और एक ये किया है, that is he has saved or he has put the amount into the citizen saving scheme which is 50,000. So उसका भी उसको मिलेगा under this only, citizen saving scheme which is 50,000. और इसके अंदर कितना रिडक्शन अवेलेबल है? 1,50,000. इसका हो कितना रहा है? 90,000 only. So he can claim the whole amount for deduction. So ये कितना हो रहा है? 98,000. और next it is 2, that is under section 80 interest. Yeah, interest saving bank interest. ठीक है. So TTA, उसमें क्या लिखोगे? सेविंग बैंक interest. We know that the maximum limit, maximum allowable deductions under this particular head is only 10,000. So even though he has received 12,000 as an interest, he will not get 12,000 as a deduction. He will get only 10,000 as a deduction. Okay. So always remember that. So total deductions available कितना हो जाएगा? 1,08,000. So now minus it and check taxable income कितना आता है. ठीक है. How much it is? 1,38,400. Okay. Sorry, 10 lakhs, no? Sorry. 10,38,400. Is the question clear with all? Is the question clear with all? See, this particular information is already given in your question. ठीक है. जहाँ पे तुम लोगों ने वो income from salary लिखा था, वहीं पे आपको पता चलना चाहिए कि this particular deduction is there in the question. And this citizen saving scheme is all given in the down. मतलब आपका जब कहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में उन्होंने वो चीज दी हुई है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो डिडक्शंस मिलने वाले हैं अंडर चैप्टर 6A वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ही मेंशन होंगे. नहीं, sometimes those deductions will be within your question also. So you have to have that eye कि यहाँ पे कौन सा डिडक्शन मिलने वाला है, कौन सा डिडक्शन नहीं मिलने वाला. ठीक है. So like this वाला, ये जो वाला है जो हमेशा probably most of the time we forget about. ठीक है. We just only consider this particular deduction, that is saving bank interest wala. In others will be considered as an income, but somewhere we forget to consider it as a deduction under chapter 6A. ठीक है. So ये बहुत भूलना. Always consider this particular interest under your deductions. ठीक है.
Am I clear? Am I clear? Okay. Now let's move to the next question. Let me check next question कौन सा है. I got the house property part. Yes, salary plus house property only I'm doing so out of now. Okay, this is the next question. Take the screenshot of the question. What it is. Mr. Vijay Joshi, Director of Good Luck Construction Limited, gives you the following information for the year ended 31st March 2022. So what has been given? हमें यहाँ दिया है सैलरी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड नीचे दिया है लेट आउट प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन. ओके, सो वी हैव टू कंसीडर बोथ द इनकम हेड्स फॉर द टोटल नेट टैक्सेबल इनकम. लेट्स स्टार्ट. बेसिक सैलरी दिया हुआ है पर एनम. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर पर एनम है तो पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है. यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12. देन वी हैव डियरनेस अलाउंस विल बी कंसीडर्ड अंडर द हेड ऑफ टैक्सेबल इनकम. एक्स रेशियो अगेन वो कंसीडर हो जाएगा. Then arrears of salary received not taxed earlier. अगर वो earlier नहीं हुआ है तो अभी क्या हो जाएगा, उसको टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर. Then HRA दिया हुआ है which is given as 72,000 और नीचे उसका exempt limit दिया हुआ है. मतलब जितना exempt limit दिया है उतना माइनस करने के बाद what you will do, बचा हुआ 32,000 will be taxable under the head of salary. Then we have club expenses given to Mr. Vijay Joshi, that is a work visit given to him, right? So perk visits are taxable or not? Perk visits are taxable or not? Perk visits taxable होते हैं कि नहीं होते? It is taxable. Yes, taxable, ma'am. Yeah, correct. Next, provident fund deducted from salary, which is 48,000. Now we know now what to do with the provident fund. यहाँ पे सैलरी उन्होंने सैलरी में ऐसा दिया नहीं है कि दैट सैलरी इज नेसेसरी, मतलब जो दिया हुआ सैलरी है उसमें वो कंसिडर्ड है सिर्फ. अभी ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, दैट यू हैव टू कंसिडर फॉर व्हाट. जब आप नीचे डिडक्शन लिखोगे ना, चैप्टर 6 का डिडक्शन आएगा, तब यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस 48,000 इज गोइंग टू गेट कंसिडर्ड अंडर द हेड 6A के अंडर 80C में जाएगा ये. ठीक है. नाउ विल मूव टू द लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट प्रॉपर्टी क्या दिया है? फेयर रेंट दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है, and then we have been provided the municipal taxes जो बाद में आएगा. So which particular amount you are going to consider under this? We know that if you have been provided with the fair rent and rent received, which rent received का amount हम लोग consider करते हैं, because rent received is more than what? Fair rent. So rent received will be considered as taxable income under the house property, and उससे में से क्या हो जाएगा? We have to minus the municipal taxes paid, right? That will give you the gross annual value of the house property, and then we'll move to the next part. ठीक है? Am I clear? Am I clear? तो डिडक्शंस आएंगे उसके अंदर, उसके बाद वाले. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? 30% ऑफ GAV, राइट? एंड देन यू हैव टू वन मोर डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन लोन. वो माइनस करेंगे. जो है यहाँ पे दो है, राइट? एक 22,000 का लोन का इंटरेस्ट है और एक 11,000 इंटरेस्ट है. दोनों भी हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे. दैट इज 33,000 का पूरा वो, और 30% ऑफ GAV. टोटल डिडक्शन विल बी अवेलेबल अंडर द हेड ऑफ house property, and we'll get that as a NAV for house property. Okay. Other information given to you is he had taken a loan from Bank of Maharashtra for higher education of his daughter, who is pursuing the MBA course in Mumbai, and he paid the interest 50. We know that total interest paid is fully allowed under the head of 6A. तो ये 50,000 पूरा का पूरा उसको क्या मिल जाएगा? रिडक्शन मिल जाएगा. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. Let's start. Are you guys with me? या तुम लोग थक गए?
Okay, so here it is. Let me copy just. Yeah. Let's start. Are you done with your formats? Are you ready with your formats? Okay. What was the name of the person? याद है? Question किया लिया था screenshot लेके. The name of the person is Vijay Joshi. Right? Let's start. What has been given to us? क्या दिया है? सबसे पहले basic salary दिया, right? So दिया जैसे दिया है वो उसी order में लिखते जाओ. Then you will not miss anything. So basic salary is given to you as amounting to rupees 4,80,000. उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद क्या दिया है? डीए दिया है, which is your dearness allowance. पूरा ईयर का एक साथ दिया है, which is 2,88,000. I might need some time because I have to just shuffle my windows continuously to see the amounts. That's why. उसके बाद क्या दिया है? Ex gratia. Ex gratia का कितना अमाउंट है? 1,20,000. उसके बाद है ex gratia के बाद है arrears of salary, जो उसके ऊपर उसने पहले टैक्स नहीं पे करा है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे, which is given as 30,000. उसके बाद दिया है हाउस रेंट अलाउंस, राइट? यहाँ पे exempt है, right? Total amount is given as 72,000 and exempt under section 10. ये sections हमेशा याद रखना, ओके? कितना exempt दिया है? 40,000. So 40,000 माइनस करो इसमें से and you get the amount outer column as 32,000. Correct? उसके बाद HRA होने के बाद क्या दिया है? There is a one perquisite that he has been allowed, and the perquisite is club expenses, right? So club expenses. How much is the club expenses given to you? 7,500, right? So 7,500 will be considered under the full income of your salary. Now let me just copy paste it. What will be the total income? Gross salary income कितना आएगा? Just totally and let me know. Huh? It is coming as 9,57,500. 57,500. Okay. Yeah. Now, deductions में सबसे पहले we know that standard deduction आता है, right? Which is 50,000. और यहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बोला है, so we will be considering professional tax paid, which is 2,500. टोटल कितना डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा? 52,500. So now what will be the net taxable income from salary? कितना आएगा? 9,05,000. Okay, 9,05,000. Next क्या आएगा? Next is your house property, right? So income from house property. इसमें we always know we have to go with the formula, right? Formula है हमारा क्या? fair rent. लिखो जो fair rent दिया हुआ है वो. fair rent कितना है? 2,40,000 and actual rent received
is 2,50,000, and we know what the formula says. If your fair rent is less than your actual rent received, then you have to consider which value? Actual rent received value for the GAV, right? So let's start. So gross annual value, जिसे कहा जाता है GAV, will be considered as 2,50,000, right? इसको बोल्ड करके रखते हैं ताकि we don't miss out on the things. Okay? Gross annual value में से हमें क्या मिलता है? We get a deduction, right? Which deductions you get? Municipal taxes paid. Municipal taxes paid. How much taxes we have paid? 25,000, right? So 25,000 will get the deduction available, and that will give you the net annual value. उसे हम बोलते हैं NAV, right? कितना आएगा वो फिर? 2,25,000, correct? Yeah, 2,25,000. Then इसमें भी क्या होता है? Again, we have some deductions that are being given to us. कौन से deductions दिए तुम्हें? यहाँ पे सेक्शन कौन सा है? Remember, 24(1). इसमें again we have standard deduction. Standard deduction क्या है? 30% of NAV. Find out how much is 30% of NAV. Yes, 30% of NAV is how much? 67,500. Correct. 67,500. Then उसके बाद एक और यहाँ पे आता है that if you have a property and if you have taken loan on it, तो उसका जो interest है that is again is available for your deductions. So यहाँ पे दो है, तो दोनों का भी loan मतलब interest जो है that will be available to you. So it is 22,000 plus 11,000, that is will be 33,000. Total deduction कितना available मिलेगा यहाँ पे for house property? How much you will get? कितना मिलेगा? It will be 1 lakhs. है? अच्छा ओके, डिडक्शंस बोल रहे हो ना, मैं भूल गई. Okay. That is next. It is net taxable income under the head of house property. कितना आएगा? 1,25,000 minus 1,05,500. कितना आता है? 1,24,500. 1,24,500. Right. So उसके बाद total gross income will be how much? Gross total income is coming as 10 lakhs. किधर गया वो? 10 lakhs 39,500. कैसे 39 कहाँ से आया? 29 आएगा. 9 lakhs 5 है, 1,24,000 है. Yeah, it is 10 lakhs 29,500. I'm trusting you guys and तुम लोग ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? Now we are having a deductions, right? So सबसे पहले deductions कौन सा दिया है हमें? ATC का deduction है, right? क्योंकि उसका पैसा जा रहा है ना for PF. So under section ATC क्या है? Contribution to PF. How much is the contribution? 48,000. उसके बाद contribution के बाद second, he has taken loan for his daughter's education, right?
So that is under section 80E. That is interest on education loan. कितना है वो? That has been 52,000. So total deduction इसको कितना मिल रहा है? 1 lakh rupees, correct. So he's getting a deduction of 1 lakh rupees. So his net taxable income is going to be what will be his next net taxable income? 9,29,500, correct. Okay. So I hope everything is clear with this particular question. Anybody is having doubt? Anywhere other than that ex gratia thing, anybody is having any doubt? एक्स ग्रेशिया के अलावा किसी को कुछ और डाउट है? Okay, so let's discuss what is ex gratia is. Ex gratia is nothing but एक अपना एम्प्लॉय का एक बोनस अकॉर्डिंग टू बोनस दैट व्हाट इट इज कि एवरी एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू गेट बोनस एवरी ईयर. ओके, तो उसका एक परसेंटेज डिसाइडेड है, दैट इज 8% to 20% तक आपको बोनस मिल सकता है. सो एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन दैट इफ योर कंपनी इज गिविंग यू, ठीक है, out of the work that you have given for the company or you have done for the company, मतलब उसको तुम लोग बोल सकते कि तुम्हारे गुडविल की वजह से या तुम्हारे काम करने के तरीके की वजह से आपकी कंपनी आपके ऊपर खुश है एंड दे आर गिविंग समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, लाइक यू नो समथिंग व्हिच इज अदर देन इज कंसीडर्ड 8% 20% is considerable amount, right? उससे भी ज्यादा आपको कुछ अगर मिल रहा है then that particular amount has been considered as ex gratia. Is that clear, Saurabh? Now there are two people, right, who asked the ex gratia what it is ex gratia. Is that clear? Okay, good. Let's stop here for the day then. I hope तुम लोगों ने लिख के रखा होगा ये सारे solutions, right? So tomorrow same time, same place, and again we all will be here, right? I hope for the same.